Hello students, now in the retirement let's start with the full sum from today, right? Now here in this full sums also we have to prepare revaluation, cash and bank account, then after partners capital account and balance sheet. Now here there is only one new point, that is when for to the retiring partner के कैपिटल अकाउंट में जो भी बैलेंस बचेगा वो हम उसको पे कर देंगे. वाई? बिकॉज ही इज़ रिटायरिंग फ्रॉम द बिजनेस, राइट? सो दिस इज ओनली द न्यू पॉइंट, अदरवाइज वर्किंग रिमेन सेम एज एडमिशन. First of all, read the sum. That first of all, see here goodwill is given. This is the old goodwill, right? Okay, then capital of all partners, that is given. General reserve is given. General reserve is to be distributed between the all partners. Partners loan is given. New point, creditors are given. Workmen's compensation reserve, that is also distributed between partners. Now first of all, now we read the adjustments. In that, first of all, X, Y, Z are the partners of the firm sharing P&L in the ratio of 3:3:2. Y retires on 1/4/16. First adjustment, land and building is to be revalued, so tick mark on land and building. Then provision for doubtful debt, so tick mark on debtors. Then after, liability of workman compensation is accepted, so tick mark on workman compensation. Goodwill of the firm is valued at 1,60,000. Y's share in goodwill is to be adjusted through the capital account of X and Z. So this is the point regarding goodwill. The new ratio of P&L sharing of X and Z is decided at 1:1, right? Okay. Then after, information from the above information, pass necessary journal entries and prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet after the retirement of Y. Now first of all, we do necessary working. Now see here, first of all, old P&L, that is 3:2 is given. New P&L, that is 1:1 is given. So we can find out gain ratio by applying new minus old. तो हम find out करेंगे X and Z का, because Y is X and Z, right? Why? Because Y is retiring from the firm, so X gain ratio, now that we know how to calculate, X gain ratio comes 1/8, Z's gain ratio comes 2/8. Now we find out value of the goodwill. Now first of all, here firm's goodwill, right, that is 1,60,000 is given, and that they distribute in between their 1:2 ratio. Now first of all, हम ये Y का हम शेयर ऑफ गुडविल निकाल ले, तो Y शेयर ऑफ गुडविल आएगा ये आएगा ये 1,60,000 इंटू ये Y का शेयर यहाँ पे है 3/8, 3 + 2 comes 8, 3/8, so 60,000. X and Z will give 60,000 for goodwill to Y in their gaining ratio 1:2. तो हम ये 60,000 जो है, दैट वी डिस्ट्रीब्यूट इन बिटवीन 1:2 रेशियो. ये 1:2 रेशियो है, उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट? सो नाउ दैट कम्स 20,000 and 40,000. सो X विल रिसीव 20,000 एंड Y विल ऑल्सो रिसीव 40,000. सो एंट्री हमने ऑलरेडी शॉर्ट सम में देखा है, both become receivers. X capital account debit 20,000, Y's capital account debit 40,000, Z's capital account debit 40,000 to Y's capital account 60,000, right? So now working for the goodwill, that is over. Now we prepare specimen.
How you solve the sum? First of all, you read the whole sum. Then after solve point for the goodwill, point for the gaining ratio. Then after prepare specimen. Now in this some journal entries also given to write down. Journal entries are very easy, so that you write down yourself, and in the board journal entries are not going to ask. So first of all, see ये revaluation account first of all, then after partners capital account, then after prepare cash or bank account, then after balance sheet of the firm. ये रही बैलेंस शीट. Okay, so prepare all the specimen. Now let's start the sum. Recording of retirement sum, right? That is method remains same as retirement, right? कि first of all हम ये जो balance sheet का सारा कुछ है that we transfer into the partners capital account, right? Then in the new balance sheet, then after we solve all the adjustments, and then after we make the totaling, right? So first of all we start recording by capitals only. So let's start to record. Now see here, capital is always recorded on partners capital account credit side. See 2 lakhs, 1 lakhs, 20,000 and 1 lakhs, right? These three capitals are recorded. Now then record opening balance of cash account. Now see here we have to prepare this bank account, but here in this illustration they have not prepared a bank account. So you do prepare bank account, and on the debit side write down to balance brought down 30,000, because इसमें कोई एंट्री नहीं है इसलिए इन्होंने नहीं बनाया है, राइट? बट इट इज़ एंट्री हो या नहीं हो कैश एंड बैंक अकाउंट बना ही देना है. Then after start recording this land and building machinery stock debtors into the new balance sheet. Then first after recording opening capital, ये रहा after recording opening capital. Second step is to pass entry for the goodwill. goodwill की entry क्या थी? See, this is the entry for the goodwill. X capital account debit, Z capital account debit to Y capital account debit. तो हम इसको पोस्ट करेंगे, लेजर पोस्टिंग ही कर. Now see, X capital account debit, Y capital account debit. ये रहा, देखो ये रहा. रिवर्स नेम टू वाइस कैपिटल. X की वैल्यू X के कॉलम में, Z की वैल्यू Z के कॉलम में, एंड ऑन क्रेडिट साइड ये X कैपिटल अकाउंट, Z कैपिटल अकाउंट, एंड कॉलम Y में ये 20 एंड 40, राइट? सेकंड स्टेप ओल्ड गुडविल इन पार्टनर. ये देखो गुडविल है 40,000. दिस वी डिस्ट्रीब्यूटेड इन बिटवीन ऑल पार्टनर्स एक्स वाई जेड तीनों तीन में इन देयर ओल्ड रेशियो. ये देखो वो भी जाएगा डेबिट साइड. ये गुडविल ओल्ड लिखा है नीचे ओल्ड, राइट? 15, 15 एंड 10. सो पॉइंट ऑफ गुडविल दैट इज ओवर. नाउ वी ट्रांसफर old balance sheets, all the particulars and assets into the new balance sheet. Title we give balance sheet as on 1/4/16 after retirement. तो ये आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग, राइट? फिर मशीनरी इज रिटर्न, स्टॉक इज रिटर्न, डेटर्स एंड बैंक. इन्होंने ये क्या किया है इधर कि सीधा एडजस्टमेंट को एडलेस करके ही यहाँ पे लिख लिया है. आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व एडजस्टमेंट. लैंड एंड बिल्डिंग पे एक टिक मार्क थी तो राइट डाउन इनर साइड लीव 1 लाइन. मशीनरी पे भी आई थिंक टिक मार्क थी तो राइट डाउन इनर साइड, राइट? एडजस्टमेंट देखे. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एडजस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट ₹2,20,000.
ओल्ड लैंड एंड बिल्डिंग दैट इज 1,99,000। तो यहाँ पे 1,99,000 प्लस 21,000 करेंगे तो आउटर साइड आ जाएगा 2,20,000। रिवैल्यूएशन अभी मैं इंक्रीज डिक्रीज आपको पता ही है कि किस तरह से करना है, तो इसमें इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज है तो जाएगा रिवैल्यूएशन क्रेडिट। तो ये रहा रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में ये क्रेडिट साइड, लैंड एंड बिल्डिंग 21,000, राइट। नाउ द नेक्स्ट एडजस्टमेंट, वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 30,000। मशीनरी यहाँ पे ओल्ड में कितनी थी 1,80,000, रिड्यूस होगा 30,000, तो आउटर साइड कितना जाएगा 1,50,000। ये देखो मशीनरी आउटर साइड आ गया 1,50,000, डिक्रीज हो रहा है 30,000 से, तो वो जाएगा रिवैल्यूएशन डेबिट साइड, ये 30,000 डेबिट साइड, राइट। ओके, नाउ द next one, that is provision for doubtful debt is to be capped at 10%. So now ये debtors है 70,000 का 10% comes 7,000, 5,000 is already given, so what effect we pass? See, न्यू बैलेंस शीट में हम 7,000 ही लेस करेंगे, राइट, बिकॉज एक्चुअली हमें 7,000 हमें रिजर्व चाहिए, सो आउटर साइड कम्स 63,000, बट इन द अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में टू बी दिया 7,000 नया, 5,000 ओल्ड, सो आउटर साइड जाएगा 2,000 ओनली। जैसा हम ये एडमिशन में करते थे वैसा ही सेम ही है, कोई चेंज नहीं है उसमें। Then the fourth one, that is liability for workman compensation is accepted rupees 15,000। ये workman compensation है, 10,000 is given, 10,000 है और हमें देना है 15,000, that means 5,000 और हमें देना है, हमारे पास कुछ बचता नहीं है, राइट। तो ये workman compensation 15,000 is given, 15,000 is given, so that only we have recorded। एंड ये रिवैल्यूएशन में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिवैल्यूएशन डेबिट 5,000, वाई 5,000 बिकॉज 10,000 इज गिवन, 15,000 हमें देना है, तो अभी रहे सिर्फ 5,000 ही देने हैं। एडमिशन में भी वैसा ही सेम आता था। सम में अभी हम देखें तो बाकी क्या बचता है, दिस पॉइंट इज सॉल्व, दिस पॉइंट दैट इज ऑल्सो सॉल्व, right, this is to be left to right, left to return, this is also left to return, this is also left to return, तो हम लिख ले। देखो लोन, now see here two partners loan is given Y and Z। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल Y is retiring from the firm, यहाँ पे लोन है, राइट। अभी जो रिटायरिंग पार्टनर है जब भी रिटायर होगा तो उसके कैपिटल अकाउंट में जो भी बैलेंस बचेगा, यहाँ पे जो टोटलिंग होगा यहाँ पे, उसमें यहाँ पे जो बैलेंस कैरिड डाउन आएगा, राइट, सो दैट वी गिव हिम इन द फॉर्म ऑफ लोन। समझ में आ रहा है। रिटायरिंग पार्टनर जब भी रिटायर होगा तो उसको पैसे किस तरह से देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टोटल में ये जो बैलेंस कैरिड डाउन जाएगा, so that we give him in the form of loan। तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे Z का लोन लिख दे एज इट इज़ 30,000 बिकॉज Z रिटायर नहीं हो रहा है। Y के लोन में हम जगह खाली रखेंगे, वी कीप दिस स्पेस, राइट, वी लीव दिस स्पेस टू राइट डाउन। देन प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन, वो 15,000 वो हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे क्योंकि हमें देना है, सो दैट इज़ अवर लायबिलिटी। देन क्रेडिटर्स एज इट इज़ 80,000। नाउ एवरीथिंग इज़ ओवर नाउ, सो नाउ लेट्स मेक टोटलिंग। टोटलिंग वैसा ही सेम एडमिशन जैसा ही, राइट। यहाँ पे आ रहा है लॉस,
दिस लॉस वी ट्रांसफ़र टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, ये रहा देखो दिस वन, राइट. देन आफ्टर वी मेक द टोटल ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टोटल ऑल्सो, टोटल में हम किस तरह से लिखेंगे, यहाँ तक ट्रांजेक्शन ओवर हुए, लीव वन स्पेस, देन आफ्टर राइट डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन. रिटायरिंग पार्टनर का जो भी बैलेंस आएगा वो हम यहाँ पे, हमने ये जो जगह छोड़ी है वहाँ पे लिखेंगे वाइज लोन. यहाँ पे वाई रिटायर हुआ है तो वाइज लोन अकाउंट, उसका जो भी बैलेंस रहेगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, बिकॉज उसका बैलेंस कैरिड डाउन नहीं करना है, वो रिटायर हो रहा है, उसका पैसा उसको वापस कर देना है, तो हम उसको लोन दे देंगे इन द फॉर्म ऑफ लोन. दिस इज़ द रूल, राइट. तो उसका आ रहा है 1,80,500 इन द टोटलिंग. तो ये लोन हम लिखेंगे अभी यहाँ पे देखो 1,80,500, राइट. ओके. तो यहाँ पे बैंक अकाउंट इन्होंने बनाया नहीं है, हमने बनाया है, तो फिर हम उसका भी टोटलिंग कर देंगे. देन आफ्टर ये, फिर ये जो है ये 1,60,547,000, that is the capital account of the existing partner. So this we record in the new balance sheet. दोनों का टोटल करके आउटर साइड 2,07,500, then make the total of balance sheet. So this is how we can solve the sum of retirement. मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया है, आप खुद से पहले प्रैक्टिस करना, वंस ट्वाइस, एक दो बार आप सम का खुद ही प्रैक्टिस करना, बिकॉज बोर्ड में इसका 8 मार्क का सम आता है, राइट. ओके.